Hello students, welcome to my channel Happy Kids Classroom. Today we'll see the poem Once I Saw a Little Bird for grade 1 English. Okay, so let's begin. Once I saw a little bird. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. So ये जो पोएम है वो किसके बारे में है? ये बच्चे एक लिटिल बर्ड के बारे में है. तो बच्चा क्या बोल रहा है और ये बच्चा क्या बोल रहा है पोएम Once I saw a little bird. ये किसके बारे में है? एक लिटिल बर्ड और एक बच्चे के बारे में है. वो बोल रहा है कि मैंने एक लिटिल बर्ड देखा. ये जिस पिक्चर में है ना यहाँ पे, तो मैंने ये I saw a little bird, उसमें एक लिटिल बर्ड देखा who came hop hop hop, जो hop 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 करते करते आ गया. उसने कहा I cried little bird. जैसे मैंने बोला इसको I cried little bird, will you stop stop stop? And little bird, तुम रुको रुको रुको. I was going to the window to say how do you do. मैं विंडो की तरफ जा रहा था बोलने के लिए कि how do you do. But he shook his little tail and away he flew. उसने अपनी जो टेल है वो ऐसे शुक की ऐसे ऐसे और वो उड़ गया. ठीक है, तो अच्छी थी ना पोएम. तो चलो न्यू वर्ड देखते हैं. BIRD बर्ड, बर्ड यानी पंछी. HOP हॉप, हॉप यानी कूदना. STOP स्टॉप यानी रुको. TAIL टेल, टेल यानी पूंछ. WINDOW विंडो, विंडो यानी खिड़की. Let's read. The bird flies out of the window. We must stop cutting trees. Okay? Next exercise is reading is fun. What did the child see? What did the child see? The child saw a little bird. What was the little bird doing? The little bird was coming, or the little bird came hopping, or the little bird came hopping, hop, hop, hop. Let's talk. Do you see any birds around your school or your house? Yes. मैं अपने घर की आप कभी देखती हूँ, आप भी देखती होंगे. ठीक है, कौन से देखते हैं? स्पैरो देखते हैं, क्रो देखते हैं, कभी पैरेट देखते हैं. ठीक है. Have you tried talking to them? कभी उनसे बात करने की कोशिश की है? तो कभी ऐसे करना कि पानी रख देना उनके लिए समझ में, तो शायद चिड़िया वगैरह आ जाए. तो कभी आपने उनसे बात किया है कि आओ आओ पानी पीने आओ. ओके, so let's do the next exercise. Join the letters from A to Z. और आपको ये जो letters हैं वो ज्वाइन करने हैं A to Z के सीक्वेंस में, A B C D E, और ऐसे पूरा उसको ऐसे Z तक आपको उसको ज्वाइन करना है. ओके, एंड देन ये पिकॉक का कलर बन जाएगा. Next is trace over the dotted lines and letters. Now color the stars. आपको यहाँ पे ट्रेस करना है डॉटेड लाइंस पे और यहाँ पे लिखना भी. I'll do one for you. Okay, so here ये ऐसे इसको ज्वाइन करना है, पूरा का पूरा ज्वाइन करना है. ऐसे अच्छे से करना है बुक में पेंसिल से. And also you have to trace the letter. Here it is, letter M. Okay, letter N है, ये letter P है, Q है and T है. Okay, so let's go towards the next exercise.
Say these words aloud and talk about the picture. Let's see the right word. Okay, look at the picture. The roof is, one second, the roof is pink or blue. What color is the roof? It's pink. तो यहाँ पे ऐसे टिक मार्क करना है. ओके ओके ओके, अच्छे से टिक मार्क करते हैं इसको ऐसे and ऐसे. Okay. The walls are yellow or red. ये walls कौन से कलर के हैं? Yellow या red? Yellow. So like this and like this. The windows are green or brown. Windows क्या कलर के हैं? Brown कलर के हैं. So the color brown is here. Brown. The door is blue or grey. Door कौन से कलर का है? Blue. तो blue के ऊपर टिक मार्क करेंगे. Okay. The dustbin is pink or green. यहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है, वो कौन से कलर का है? Pink. Pink. The plants are green or orange. Plants कौन से कलर के हैं? 1, 2, green. So green. Is gray or brown? यहाँ पे फ्लोर कौन से कलर का है? Grey. तो ग्रे के ऊपर टिक मार्क करेंगे. ओके, तो इसे आपको बुक में करना है. Next exercise. Oh, we're done with the lesson. Great. So now that we're done with this lesson, I will see you in the next video with another lesson. Okay. Till then, make sure you like, share, and subscribe to my channel. Bye bye.